So this is your project in which you are going to introduce yourself by giving this information, background information, in which you are going to tell us your name, of course, any house name. For example, I'm called Chino at my home. My home name is Chino. For 10 to 12 years when I was doing my second year, nobody knew that my name is Chino. Oh, sorry, Sadia. They always called me Chino. So you must have a home name. Goga, Guddu, Munna, something like that. So you can share that with us. Chino. It's Chino English. It's Pashto. This comes from Pashto. बिल्लू कह सकते हैं बिलाल को, राइट? Some kind of names will be there, right? फहद को फादी कहा जाता है. लुबना को क्या कहते हो? My sister's name is Lubna. Okay, my sister's name is Lubna and my father calls her Lubi. Out of love. ठीक है? तो इस तरह के नेम्स होते हैं, तो आप उसकी बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो मुझे नाम दिया गया था, बिकॉज आई वॉज बोर्न इन दिस इस्लामाबाद हॉस्पिटल, तो साथ वाले बेड पे एक बच्ची पैदा हुई, उन्होंने उसका नाम चीनो रखा. तो उन्होंने टेम्परेरी नाम मेरा चीनो रख दिया, और वो फिर एक अरसा दराज मेरे साथ अटैच्ड रहा है. मेरे मोहल्ले वालों को दे डिडंट नो दैट माई नेम इज सादिया टिल आई वॉज डूइंग सेकंड ईयर. एवरीबडी वुड कॉल मी चीनो. यहाँ रहती चीनो कहाँ? ठीक है. See, so you can find such names if you have any. If you don't, make some up. Okay, imagination can take you places. And then, is there something interesting about your name? Maybe you want to share the meaning of it, origin of it. Some origins are from Arabic, some are from Persian, etc., etc. Your names should have origins as well. Then your hometown. Name, history, a photo of your hometown. Why is it famous? Do you like it or not? If you like it, why do you like it? If you don't like it, why do not you like it, right? फोटो किस तरह से आप लगा सकते हैं? अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो ऑफ कोर्स फैसल मस्जिद और इस तरह की किसी चीज़ की फ़ोटो लगाई जा सकती है. अपने घर की फ़ोटो लगा सकते हैं इफ़ यू आर ओके विद इट. कैन यू मैनेज दैट? हॉस्टल में भी रहते हैं तो वो भी आपका घर ही है ना, आप फ़ोटो लगा सकते हैं. देन फैमिली इंफॉर्मेशन इज़ देयर, इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड फैमिली. Now, this is something that one of the classes that I was teaching in previous semester, they were not okay with. They did not want to share information regarding their family. Do you have same concerns? No, ma'am. Anyone? There was this student who said that I cannot talk about the females of my house, but I can talk about my father and brothers. That could be it, and that's all right. That's cultural thing. If you don't want to talk about your family, that's fine. It could be optional. Write-up में you can submit of course, but when you're speaking about it, you can skip it. But आप ये तो बता ही सकते हैं ना, जैसे मैं अपने फादर मदर के साथ रहती हूँ, ठीक है, और मेरी 3 बहनें हैं. That's fine. इसमें मैं और कुछ रिवील नहीं कर रही, right? Then who are you close to? A photo with them maybe. That could be if you would like to share. जिससे आप close हैं, जिससे आप ना करें. It's not mandatory. Some of the points are optional. मैं उन्हें रेड कर देती हूँ तो आपके माइंड में हो. जिसके आप क्लोज होंगे वो आपके क्लोज नहीं. If I'm close to my father, isn't he close to me? No? No. अच्छा, one-sided closeness दिखानी है आपने. That's not closeness. That is obsession. वो क्लोजनेस होती ही नहीं. क्लोजनेस म्यूचुअल होती है हमेशा. नहीं बेटा, आपके घर में जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई एम मोर क्लोज टू माय फादर. ओके, यू कैन हैव अ फ्रेंड देन. What's wrong with you, Fahad? You need to find some. Anyway, ठीक है, you can talk about it. Like, I don't have anybody close, but I'm more close to my art. Maybe you have a skill or something. You can talk about that. Why not? They are part of your extended family. Do you understand the difference between immediate and extended family? Some of the men, they have this obsession with their cars and vehicles. मेरे घर के सामने एक बच्चा रहता है, उसके पास वो स्पोर्ट्स बाइक है. अस्तगफिरुल्लाह, when he enters the gully, I seriously want to break that bike into pieces. और वो एक्चुअली रहता है बिल्कुल सामने वाले घर में है, तो वो जब उसका गेट नहीं खुल रहा है तो वो इतनी बुरी तरह से वो रात को 12 बजे आता है. एक तो प्रॉब्लम यहाँ से भी आता है. 3 बजे आता है, लेकिन सुकून मिलता है बाइक की आवाज सुन के, गाड़ी की आवाज सुन के. I like those vehicles जो पास से गुजर जाए पता भी ना चले. I love those. वो अनअफोर्डेबल होती हैं. ठीक है.
Then work experience. If you do not have any work, then talk about a task assigned to you. Maybe babysitting. You took care of your nieces and nephews. A wedding ceremony, you were assigned to take care of the chairs and the tables. That is a task, right? तो आप उसको इंटरेस्टिंग वे में डिस्क्राइब करेंगे कि वंस इन माई विलेज आई वॉज असाइंड विद दिस टास्क वेयर आई वॉज सपोज टू टेक केयर ऑफ द chairs and tables, but unfortunately the guests were 30 and I arranged only 5, and that was a chaos. My father gave me a tight slap in the back for not counting correctly or something. कोई interesting fact आप हमारे साथ share करें. Fixed a tap or cleared a gutter. I've done this. I can do this. I can do this as well. I can fix a bulb as well. तो इस तरह की कोई चीज़ आप कुछ नहीं कर सकते? नहीं, मुझे लगा कि अच्छा कोई और काम, कोई और टास्क में आप ला सकते हैं, आपकी चॉइस। सर्दियों में गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं सारे किए, तो इसको आपने बयान करना, यू हैव टू डिस्क्राइब एंड डिस्कस इट। आगे देखें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, एकेडमिक प्लान्स। उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, बता दें। Where do you see yourself in 10 years? You can just simply say that in the next semester I'll be dropping out and I'll be opening my own thela of chips. That's also a plan. I have been thinking about it. I'm very, very serious because academic life is too hectic. ठीक है, इसमें दिमाग बहुत यूज होता है, तो मैं खुद चाहती हूँ कोई चिप्सों की रेडी वगैरह लगा ली जाए because it gets me more money anyway. So ये आपके 10 years में कोई भी हो सकता है। आप में से बहुत सारे लोग फोकस्ड भी होंगे जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर को अप्रोच भी कर लिया होगा एक्सेट्रा, राइट? यस मैम, ये जिन्हें पीछे पढ़ती है, मैं भी यूके जा रहा हूं, उमरकोट। दैट इज द चॉक ऑफ, बस फिर मेरे से आगे आपने सुनना है कुछ, ठीक है, आगे चलें। Where do you see yourself in 10 years? Any university, which one or why? Of course, some of you must have some inspiration and aspirations. आप में से CSS वाले बच्चे भी होने वाले हैं, ठीक है, कोई ना कोई होगा। So you talk about these things. Then post-graduation goals. Do you understand the difference between short-term goals and long-term goals? Yes, ma'am. These are the long-term goals and this is the short-term goal. जैसे आपकी 4 साल की डिग्री होगी तो आप क्या करोगे, उसके बारे में आप बात करोगे। ओके, दैट्स फाइन। ये शॉर्ट टर्म तो फिर वो तो नेक्स्ट सेमेस्टर में भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, वो तो दैट्स फाइन। ओके, देन आगे देखिए, स्पेशल इंटरेस्ट, हॉबीज, स्पोर्ट्स, क्लब्स, मेंशन टू इन डिटेल। हाइकिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, कुछ भी। टिकटॉकर भी है तो दैट इज ऑल्सो अ हॉबी, यू कैन टॉक अबाउट दैट। देन आगे देखिए, वन इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल थिंग अबाउट यू, एनी पर्सनैलिटी ट्रेट और हैबिट। जैसे यू कलेक्ट समथिंग, you have a habit of painting walls around your house, or you have a collection of certain thing, or maybe you do not have control over your anger, etc, etc, or you're very sweet, or you're very मैनिपुलेटिव, कोई भी पर्सनालिटी ट्रेट को आपने बताना है और उसको आगे जस्टिफाई करना है। देन वन इंटरेस्टिंग और अनयूजुअल एक्सपीरियंस, मे बी यू सॉ अ जिन और अ भूत समवेयर, अ मोक्कल वॉकिंग बिहाइंड यू, or some making sure that there's somebody behind you, right? You slapped somebody or somebody pushed you down. मैंने जिन देखा है। ओके, ठीक है, कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट हो तो वो आप बता सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करते हैं। एंड देन यू आर गोइंग टू गिव अ कंक्लूजन ऑफ योर ओन एंटायर हिस्ट्री कह लें, इंट्रोडक्शन कह लें या स्पीच कह लें, वो किस तरह से स्ट्रक्चर करना है वो आपकी बात है, ठीक है। दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस इन योर स्पीच। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ स्पीच आपने कौन से रूब्रिक को फॉलो करके लिखनी है। रूब्रिक इज अ स्टेप बाय स्टेप गाइड विच विल टेल यू कि कौन से सेक्शन में कितना लिखना है। ऑफ कोर्स these will be your points that you are going to incorporate, लेकिन स्पीच लिखने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। जी, yes, you can add imaginative things, like he said he doesn't have a friend or any close family member, he can make someone up, ठीक है, वो आपकी चॉइस है बेटा। आपने जब हमें बताना है तो वो हमें ना पता चले कि वो मेड अप है। These are the important points. Speech to be written and submitted in hard and soft copy both. Present rather perform for 4 to 5 minutes. It could be 3, but not less than 3 minutes.
and then make a PowerPoint if you're going to introduce any pictures or अगर कुछ आप impact show करना चाहते हैं. Handwritten is not allowed, it has to be typed. अगर आप यहाँ कुछ लिख के लाना चाहते हैं, होता है ना 3 points लिखे हो तो आप वो ला सकते हैं. Deadline is 6th of December. Soft copy to be submitted at 7 and 7th December को hard copy. मैम आगे नहीं हो सकती डेडलाइन. इससे ज़्यादा आगे शादी फैसलाबाद किसकी आपकी शादी है? मेरी You know, चले. मैम जिंदगी की पहली शादी अटेंड करनी चाहती Okay, your deadline is 13th then. Yes, 13 तक ठीक है. इसको बुक किया है, सस्ती चीजें नहीं करते बुक. Okay, 14th then. जी Okay, the most important part is that your presentations can be taken in any of the classes. Always be prepared. Of course, it's about you. इसमें हमें वो rote learning रटे की तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है? So this is your project. आप समझ सकते हैं इसमें आपका दिमाग इस्तेमाल नहीं होना. If you pay attention, you can easily get 10 out of 10 in this. There's nothing, mathematical about it, or it's not that difficult. आप कर सकते हैं. अब अगर आपके पास बेटा कोई क्वेश्चन है फ्रॉम दिस, गो अहेड एंड आस्क. इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर हम चलते हैं आगे.